इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक रेलवे स्टॉक के बारे में। अराउंड 9 मंथ बैक जुपिटर वैगन को डिटेल में डिस्कस किया था और उस समय ही मैंने रेलवे सेगमेंट में जो फंडामेंटल चेंजेस हो रही थी विच वॉज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशनल इन नेचर, वो मैंने शेयर किया था। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन का एक दूसरा पहलू आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड। टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड में मेरी एंट्री 103 पे एक्जैक्टली एक साल पहले हुई थी और द स्टॉक हैज given 285% return over 1 year. I made second entry when the price was around 165. Recent as 333 पे भी मैंने स्टॉक में थोड़ी सी पोजीशन ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे स्टोरी कन्विंसिंग होती जाती है, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को उसमें अपना एलोकेशन बढ़ाते रहना चाहिए। सो इस एनुअल रिव्यू में मैं एनालाइज करूंगा कि क्या अभी भी इसमें पोजीशन लेने लायक है या नहीं, बिकॉज दिस हैज बिकम मोर देन 3.5x। सो बहुत सारे लोग स्टॉक प्राइस देख करके घबरा जाते हैं कि ये स्टॉक तो बहुत बढ़ चुका है, इसमें पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। दैट इज वेरी कॉमन रिएक्शन टू द स्टॉक प्राइस हाइक. But as an intelligent investor, my job is not just commenting on the stock price movement. I have to look at the valuation of the stock. And that's what I'm going to share with you, the secret sauce of valuing a growing stock. You are going to enjoy this journey because what I'm going to share in the last end of the video is actually what I've learned while working with institutions like ICICI Bank or L&T Finance. तो वहाँ पे मैं एक फाइनेंशियल मॉडल प्रोजेक्ट करता था, तो वही चीज मैं आपके लिए करने वाला हूं और मैं एक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन करूंगा टीटागढ़ वैगन लिमिटेड का कि करंट प्राइस से 3 साल तक फ्यूचर में क्या लाई करता है। फिर हम 1 साल बाद फिर इसकी रिव्यू करेंगे एंड विल सी वेदर द बिजनेस हैव परफॉर्म्ड अकॉर्डिंगली और नॉट। और अगर बिजनेस परफॉर्म करेगा दोस्तों तो स्टॉक प्राइस विल डेफिनेटली परफॉर्म। दैट इज द मंत्रा विच आई फॉलो एट साधन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो बिजनेस फंडामेंटल ड्राइवर थे 2022 में जब मैंने इस स्टॉक में पोजीशन ली थी और आज के डेट में क्या चेंजेस हुए हैं, उन ट्रिगर का इफेक्ट कैसा रहा है और एट प्रेजेंट वेदर देयर आर गुड इन्वेस्टमेंट ट्रिगर इन द स्टॉक और नॉट, बिकॉज दिस स्टॉक हैज बीन इन न्यूज। सो एट वन गो आई विल टेल यू द होल स्टोरी पास्ट ओवर लास्ट 1 year एंड दैट हैज लेड टू मेकिंग ऑफ ए 3-bagger फ्रॉम साधन पोर्टफोलियो। दोस्तों, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर आप देखते हैं तो अगर कंपनी बड़ी है तो उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज कंसोलिडेटेड नंबर गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ कंपनी, जहां पे कंपनी की बाकी सब्सिडीज में क्या हो रहा है, अलाइड बिजनेसेस में कैसा परफॉर्मेंस है, वो सारी चीजें कैप्चर होती है। सिंस TWL के पास एक इटालियन सब्सिडरी है, उस कारण से मैंने इस कंपनी की कंसोलिडेटेड नंबर पहले देखे। देन आई नोटिस दैट द नंबर्स वर नॉट एट ऑल गुड। Company was making losses on consolidated basis. EBITDA margin was down. वहीं इस कंपनी की standalone numbers were fantastic. Top line growing at 56% year on year, and EBITDA was also growing at 34%. Company was making decent EBITDA margin of 11.4%. Profitability was also thriving with 23% year on year quarterly growth. And I noticed that standalone financials तो बहुत ही अच्छे 44% से टॉप लाइन ग्रो कर रही है। EBITDA का भी अगर कैगर ले तो वो भी 72% का है। So all fundamental driver of core business were present there. So the standalone picture was pretty right. So you can see the clear contrast between the consolidated numbers and standalone numbers. Why standalone is doing good and consolidated not doing good? इसका मतलब है कि consolidated में कुछ laggard है और वहां पे मुझे फोकस करना चाहिए। सो मैंने जूम इन किया बट आई हैड टू लुक क्लोजली कि कंसोल लेवल पे क्या हो रहा है और कंसोल लेवल पे क्या हो रहा है ये जानने के लिए आई विल टेल यू टू द सेगमेंटल एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक। एंड सेगमेंटल एनालिसिस करने का मेन एसेंस ये है कि मुझे पता चले कि मार्जिन कहाँ पे आ रहा है और कहाँ से मार्जिन जा रहा है। सो 3 सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट करती है। फर्स्ट इज फ्रेट रोलिंग स्टॉक। तो फ्रेट रोलिंग स्टॉक इज सिमिलर बिजनेस जस्ट लाइक जुपिटर वैगन लिमिटेड, जहां पे वो स्टेशन वैगन बनाते हैं कंपनी रेलवे के लिए और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। सेकंड इज पैसेंजर रोलिंग स्टॉक, जहां पे वो वंदे भारत या EMU DMU पैसेंजर ट्रेन के लिए बॉगी बनाते हैं। दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड थर्ड एंड स्लाइटली लोअर इंपॉर्टेंस जिस सेगमेंट का है वो है शिप बिल्डिंग एंड ब्रिजेस एंड डिफेंस वाला सेगमेंट। ये तीनों सेगमेंट में अगर जूम इन करें तो FY22 में क्या हो रहा था कि फ्रेट एंड रोलिंग स्टॉक की मार्जिन 11% पे फिक्स थी। दो Q4 FY22 और Q4 FY21 11.2% का मार्जिन स्टेबल था। वहीं ईयरली बेसिस पे बात करें तो 13% पे स्टेबल मार्जिन पे ये बिजनेस ऑपरेट कर रही है।
सो एक स्टेबल मार्जिन, फास्ट टॉप लाइन ग्रोइंग सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा सेगमेंट जो था, जो शिप बिल्डिंग एंड ब्रिजेस एंड डिफेंस का है, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, नेगेटिव मार्जिन से पॉजिटिव मार्जिन में ये सेगमेंट मूव कर रहा था। तो एक ग्रीन शूट मुझे दिख रहा था। सो ये दो ग्रोइंग बिजनेसेस थे जहां पे मार्जिन आर इंटैक्ट एंड मार्जिन आर स्टेबल। बट द थर्ड सेगमेंट विच वाज पैसेंजर रोलिंग स्टॉक, वहां पे मार्जिन वर ऑलवेज नेगेटिव। क्वार्टरली बेसिस पे बात करें या एनुअल बेसिस पे, दिस बिजनेस वाज लूजिंग कैश। सो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ कैश बर्न। उस समय मैंने क्विकली इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखी, तो फाइनेंशियल्स में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाज हेल्दी एट अराउंड 16%। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी कंपनी डिसेंट ऑपरेट कर रही थी। FY22 में भी 38 करोड़ पे पॉजिटिव कैश फ्लो था, दैट वाज ओके। एंड बेस्ट पार्ट वाज कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही क्लीन थी। कंपनी की नेट डेट जो थी वो सिर्फ 15 करोड़ की थी एज ऑन FY22। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट अच्छी है, लिवरेज बिजनेस नहीं है, एक यूनिट कैश बर्न कर रहा है बट 2 यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं। सो ओवरऑल पिक्चर लुक लाइक इंटरेस्टिंग पीस। वहां पे मैं इस स्टॉक को मैंने और क्लोजली देखना शुरू किया। तो पिछली बार जब मैंने स्टॉक को देखा था तो उसके पहले ये स्टॉक काफी न्यूज में थी, बिकॉज कंपनी हैज गॉट अ ह्यूज ऑर्डर ऑफ 21,000 wagons, which was totaling around 7,800 crores. So वो न्यूज कुछ ही महीने पहले आई थी। एक्चुअली उस न्यूज के कारण कंपनी की ऑर्डर बुक एज ऑन 31 मार्च वो हैड बलून टू 10,675 करोड़। 2,500 का सेल्स उसके अगेंस्ट, उससे 4 गुना ज्यादा बड़ी उसकी ऑर्डर बुक। 5% was freight rolling stock, 11% was coming from passenger rolling stock, 4-5% was from shipping and defense business. The company was focusing on freight at that point of time, and I was very bullish on manufacturing of freight side of the thing, because जो dedicated freight corridor है that was taking shape. And I was very confident that being a number one player in this freight wagon manufacturing, they are poised to do well. उस समय मैंने इस कंपनी में जो पेन पॉइंट देखा था वो कंसोलिडेटेड लेवल पे वो आ रहा था इटली से। इस कंपनी का एक इटालियन कनेक्शन था। 2015 में इस कंपनी ने टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए एक इटालियन रेल वैगन मैन्युफैक्चरर फाइरेमा को एक्वायर किया था। That was basically an acquisition जहां पे उन्हें मार्केट एक्सपेंशन भी मिल रहा था, साथ ही साथ उन्हें they were getting access to technology, but there was a big challenge involved. Acquisition के समय ही बहुत कुछ one time exceptional losses हुए थे। This company was having certain orders which were actually not profitable. So because of legacy issues, legacy order book, the company could not be turned around during last 4-5 years. FY22, yani roughly after 7 years, still after 7 years, this was a pain in the neck of this company. But ये acquisition को मैं अभी भी एक बुरा एक्विजिशन नहीं कहूंगा, बिकॉज ये एक स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन था व्हिच वाज टोटली अलाइन्ड विद द बिजनेस ग्रोथ। सो टीएफए की टेक्निकल नो हाउ, because of being in a developed market, was superior than us, and that's why Titagarh wagon got the design capabilities and manufacturing capabilities of advanced railway coaches and train power system as well as metro coaches. इस टेक्निकल कैपेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए ये एक्विजिशन किया गया था। साथ ही साथ the idea behind the acquisition was to gain foothold into propulsion market, which was roughly 3,000 crore market. Propulsion market में मैं बाद में आऊंगा, but you are getting the idea that this acquisition was a very strategic in nature and it actually created value for the company. But when I looked at it, it was not taking much. Italian subsidiary के performance पे मेरे turn dependent था, तो I looked closely कि I noticed certain green shoots which company was talking about कि company ने इटालियन कंपनी में इटालियन गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया है फॉर इक्विटी पार्टिसिपेशन। दैट वाज अ इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मी, बिकॉज अगर एक लॉस मेकिंग कंपनी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, इसका मतलब कि वो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट अगर आ जाती है, दे हैव इनफाइनाइट कैपिटल अनलाइक टिटागर वैगन जिनकी बैलेंस शीट लिमिटेड है। सो द साइनिंग ऑफ टर्म शीट फ्रॉम इटालियन गवर्नमेंट वाज अ वेरी पॉजिटिव ट्रिगर फॉर मी, एज वेल एज कंपनी ने जो उनकी जो लेगेसी इशू के कारण जो डेट बिल्डअप हो गया था उसको भी सेटल करने की कोशिश की, और उसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। तो उनका जो मेन लैंडर था इटली बेस्ड, उसने इस इटालियन सब्सिडरी को 2 साल का रिपेमेंट शेड्यूल एक्सटेंड कर दिया। इटली में एक लकी ब्रेक की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था, सो मुझे लगा कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड। सो इटली से एक गुड न्यूज उस दौरान Q4 FY22 में आया, दैट गवर्नमेंट ऑफ इटली वांट टू एक्वायर दिस पोर्शन of their stake in Titagarh Firema, because Italy government has allocated 40 billion euros for specifically for railway sectors, and this company was lying in their focus area. So
under this scheme of reconstruction, the Titagarh wagon got rid of their A-link subsidiary, and this has primarily led to the re-rating of this stock in TWL because they got rid of this Italian loss-making subsidiary. So TFA become an associate company. पहले वो subsidiary थी जिसका रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए उनका नंबर कंसोल होता था. वंस इट बिकम एसोसिएटेड कंपनी तो उसका कंसोलिडेशन नहीं होता है, सो लॉसेस भी कंसोलिडेशन होना बंद हो गए फ्रॉम Q2 ऑन FY23 ऑनवर्ड. सो रिपोर्टिंग पर्पसेस से ये क्लीन अकाउंटिंग हो गई और साथ ही साथ एक सिंप्लीफाइड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी स्टॉक मार्केट को काफी पसंद है, इसीलिए द स्टॉक गॉट री रेटेड इन अ बिग वे बिकॉज स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड का जो डिफरेंस था दैट got eliminated. Let's talk about something domestic जो कि करंट थीम में भी है, वो है वंदे भारत. तो उस समय वंदे भारत में कंपनी ने बताया था अपने कॉन कॉल में कि दे आर पार्टिसिपेटिंग ऑलरेडी विथ वंदे भारत. They've got an order for developing propulsion system for वंदे भारत a few months ago. इससे मुझे ये लगा कि ये कंपनी जो है वो काफी फॉरवर्ड लुकिंग है, एडवांस टेक्नोलॉजी जे भी तो है ही, साथ ही साथ दे आर वर्किंग टुवर्ड्स द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच amongst train. So that speaks volume about the quality of management. And another trigger for me was this company had made highest quarterly revenue in 25 years in Q1 FY23. So the company was on the path of transformation for sure. So that was the reason I loaded in this stock more. The management looked to me like a management with a plan. और ये plan था to develop their own propulsion system. Because propulsion system is a high margin business, and that's why this company was always focused on developing of their own propulsion system. And इसका hint आपको Q4 FY23 यानी last con call में भी मिल जाएगा, जहाँ पे उन्होंने यहाँ तक कहा है कि they are trying to develop their own propulsion system in a fully independent manners, and this will be a reality in next 2-3 years. As per company, we are definitely going to see a quantum jump in overall margin of the PRS, that is passenger rail system. So इस propulsion system को अगर मैं dig down करूं तो I noticed that primarily this company acquired this TFA back then in 2015 in order to gain access to 3-phase IGBT based propulsion system. In 2020 also they got into a strategic alliance with ABB India to develop this 3-phase IGBT propulsion system. अगर इस press release को आप zoom in करके notice करेंगे, then you will notice that this was an exclusive cooperation agreement with ABB. यानी कि they were not just going for technology, but they were able to dictate terms with their technology counterparts, जो कि ABB India जैसी बड़ी entity की मैं बात कर रहा हूँ, which speaks that this company stands somewhere. Company is a regarded company in the industry. Through this ABB licensing, they were very confident that this will help them to expedite and strengthen their presence in Indian propulsion market, which is 3,000 crore market, which follows a 25 kV AC system. So basically, the whole endeavor is to develop a 25 kV AC system. IGBT was a step forward towards it. Basically, ये 25 kV AC system is a pathway to e-locomotive, which is a huge business opportunity जिसमें Alstom और ABB और Siemens ऐसे बड़े प्लेयर ऑपरेट करते हैं. अगर ये कंपनी उस मार्केट में स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रिएट कर पाती है, then it would be hugely margin accretive business for them. So इस क्वेस्ट को इन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है इन ईयर 2023 ऑल्सो. जब इन्होंने BHEL के साथ जॉइंट वेंचर किया फॉर विनिंग दिस ऑर्डर ऑफ वंदे भारत ट्रेन्स, तो कॉनकॉल में दे हैव ऑल्सो सेड दैट we all know that BHEL is a leader in propulsion system making, and they would be developing the propulsion system for Vande Bharat train. So I think the plan is to gain access to the technology, and JV route is a very typical route through which when you work with a company जिसके पास technology है and you learn the know-how and you develop of your own. So I think this is the last leg of their sprint for acquisition of this technology. So ये propulsion system को लेके इनका game plan बहुत simple है. That so far they have developed traction motors, they developed traction converters with ABB, and with BHEL they will develop the manufacturing know-how as well. They had delivered the first traction motor, and same is under trial with RDSO, which is the approving authority of all the new designs in Indian Railway.
सो वहाँ पे ट्रायल रन हो रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी 16,000 किलोमीटर पे इनका ट्रैक्शन मोटर्स ऑपरेट कर चुका है. विद इन नेक्स्ट 2 years एज पर मैनेजमेंट दे विल रिसीव अप्रूवल फ्रॉम रेलवे फॉर your own propulsion systems. Since this product would be backward integrated and it would create huge margin for this company. And talking about the management, मुझे ये management बहुत ही clear लगी. This management is very specific when they talk with analysts, because somebody has asked you, since you already have Vande Bharat in pipeline, it's a 50,000, 60,000 crore opportunity. What do you think that what would be your order flow in next coming 3 years? But company choose to abstain from giving any forward-looking statement, and they said this would be very speculative because at that time they were not having any firm order with respect to Vande Bharat, which later on they got. But this speaks about the company, in spite of being in the race, they were very silently performing and silently watching the market without talking much about it. As well as company की एक और अच्छी बात लगी मुझे, वो company का minimalistic attitude towards capital expenditure, because company ने खुद ही कहा अपने con calls में that we have been very frugal in our approach towards capital expenditure. At the same time, they have innovatively increased their capacity at the minimum possible capex required. So that's why इस company ने कम capex में ज़्यादा अच्छा business growth किया है. And they were saying that in next 3 to 5 years they are going to spend roughly 1,000 crores. So एक frugal management अगर 1,000 crore spend करने जा रही है, then my expectation from this stock naturally becomes very high, because उन्होंने बिना कम पैसे खर्च किए ही इतना अच्छा ग्रोथ किया था, थैंक्स टू इनोवेटिव जेवीज. सो दे वर बाउंड टू डू वेल, दे वर poised to do well. The company which I invested was having an order book of 10,000 crores. Now this order book has ballooned to 27,000 crore. And we all know there are two major reasons why this has happened. So basically इस कंपनी के लाइफ में 3 मेजर ऑर्डर्स हुए. पहले ऑर्डर के बाद मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया था, और दूसरे 2 बड़े ऑर्डर आए जिसके बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा. ऑर्डर बुक में जो एक्सपेंशन हुई है उस ट्रांसफॉर्मेशन के 2 लेग हैं. फर्स्ट वन इज फ्रेट रोलिंग स्टॉक, जिसके बारे में आप ऑलरेडी काफी जानते हैं, बिकॉज मैंने जुपिटर वैगन लिमिटेड में इसे कवर किया था. तो काफी बड़ा ऑर्डर बुक है इस कंपनी के पास, एंड कंपनी इज करेंटली मेकिंग 2,000 वैगन पर क्वार्टर्स, और दे आर टारगेटिंग टू इंक्रीज इज टू 3,000 वैगन पर क्वार्टर. सो वहां पे ग्रोथ वॉल्यूम ड्रिवन आने वाला है, मार्जिन वहां पे इंटैक्ट रहेंगे, डबल डिजिट मार्जिन आएगी. So that business is totally set, और वहां पे कुछ चांसेस है थोड़े बहुत एक्सपोर्ट करने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, थैंक्स टू देयर इन्वेस्टमेंट इनटू इटालियन सब्सिडी. सेकंड लेग इज पैसेंजर रोलिंग स्टॉक, जहां पे जब मैं पैसेंजर रोलिंग स्टॉक बोलता हूं तो वहां पे एक लेग जो पैसेंजर ट्रेन होता है, दूसरा लेग बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज ग्रोइंग, विच इज मेट्रो. सो कंपनी के पास मेट्रो, पुणे मेट्रो के ऑर्डर है, बैंगलोर मेट्रो का ऑर्डर भी इनके पास है. तो 2 बड़े मेट्रो के ऑर्डर उनके पास ऑलरेडी हैं, और thanks to their arrangement with a Chinese company, CERR, they got the technology to develop aluminum-based passenger coach. So technology-wise, they have more than enough capabilities to do all kind of manufacturing, whatever is there on the card, and that's why they are very successful in passenger rolling stock. And ये segment जो है वहाँ पे export करने की भी opportunity आ सकती है. And with the strong order book of 12,700 crore, this segment is poised to grow, and going forward after a certain time, this would be 50% of their top line. So the transformation में सबसे बड़ा रोल जो था वो था वंदे भारत का ऑर्डर जो इन्हें मिला. So they got an order to make 80 वंदे भारत trains, where they own 51% stake in the JV and another partner is BHEL. सो ये ऑर्डर काफी बड़ा है, 9600 करोड़ का सप्लाई का ऑर्डर है, और उसके बाद सप्लाई करने के बाद 13,500 करोड़ का जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का 35 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है. सो दैट वुड बी काइंड ऑफ एन्युटी बिजनेस. सो बहुत ही स्टेबल कैश फ्लो वाला बिजनेस है, वो एक अपॉर्चुनिटी है. सो द ओवरऑल अपॉर्चुनिटी साइज इज 23,000 करोड़, एंड इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज, उसमें प्राइस एस्केलेशन के क्लॉज भी हैं. सो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि अगर स्टील की प्राइसेस बढ़ गई तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी. सो एक स्टेबल मार्जिन का कॉन्ट्रैक्ट है, और इट्स अ डिसेंट कॉन्ट्रैक्ट which will transform this company into new league, because they have a 23,000 crore to make out of it, and they own 51% into it. Second order जिसके बारे में आपको पता होगा, अगर आपने RK4G को भी एनालाइज किया होगा, अगर साधन पे आपने RK4G की वीडियो देखी होगी, then you know what I'm talking about. This is the JV between 2 Sadhan portfolio stocks, Titagarh Wagon and Ramkrishna Forging Limited. दोनों की 50-50% की JV है.
जहां पे दे आर मेकिंग फोर्स्ड व्हील फॉर इंडियन रेलवे एंड प्राइवेट rail manufacturer as well. So they are making capacity for 2 lakh forged wheel offtake per year. और ये फोर्स्ड व्हील का जो टेंडर क्यों आया, एक्चुअली ये फोर्स्ड व्हील बनाने के मैन्युफैक्चरर सबसे ज्यादा जो है वो यूक्रेन में है और चाइना में है. एंड ड्यू टू कोविड एंड देन यूक्रेन वॉर, the supply from Ukraine was not coming, and that's why this created a unique opportunity for these two Sadhan portfolio stocks. And that's why this is a huge order, because this is 12,600 crore order. This is a guaranteed offtake of 40% of the capacity. So 80,000 wheels का offtake Indian Railway करेगी for next 10-15 years. So it's again a stable cash flow business. तो इसके कारण दोनों स्टॉक री-रेट हुए हैं. RK Forging also become 2.5 bagger for me, and this stock also has become 3.5 bagger for me. This piece of information has really worked magic for us कि इस कंपनी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो ऑर्डर बुक में भी हुआ है, साथ ही साथ मार्जिन साइड में भी ट्रांसफॉर्मेशन की बातें हो रही हैं. बिकॉज द कंपनी सेड दैट इन द पैसेंजर स्टॉक, वहां पे the company is looking to acquire better margin. They are trying to acquire 8 to 10% margin in next 1-2-3 years. और उसके beyond 2 साल के बाद अगर propulsion system develop कर लेते हैं, then definitely they will go beyond 12-13% margin overall in passenger system. So passenger system से margin expansion की बातें हो रही हैं, and I expect कि after 2-3 years they will be able to expand the margin in propulsion system, even if they don't get approval from railway. Even though company is confident that they will be able to generate 8 to 10%